Uh, well, friends, today we will discuss the topic ratio analysis and decision making. So, well, friends, this topic we have taken up for the students of MCOM program, MBA program and MCA program from Indira Gandhi National Open University. So, well, friends, this topic is gaining a lot of importance these days because it helps the managers in taking very significant decisions as far as the business is concerned. So, well, friends, when we speak about ratio analysis, so ratio analysis is nothing but basically it is a number expressed in terms of another. And dear friends, I tell you that ratios are meaningless until or unless the relationship is established among two things. Say for examples, if we are going to calculate the ratio between sales and profit, so sales and profit itself will not reveal anything until or unless the relationship is established between these two things, that if the sales increased by this much of amount or if this much of percentage, then what would be the rate at which the profits would be increased. So therefore, it is quite essential that in order to draw the inferences, there must be a relationship between the two things. Only then we can draw the inferences and we can take significant decision as far as the business is concerned. Say if I want to measure the performance of two managers for a particular period, and if I say that A has earned a profit of rupees 1.5 lakh, whereas B has earned profit of rupees 1.8 lakh. So it's quite obvious that by going through these two figures, I may conclude that the performance of B is better than that of A, because B has earned more profit than A, because A has earned profit of rupees 1.5 lakh, whereas Mr. B has earned profit of rupees 1.8 lakh. But this itself is not sufficient while taking a managerial decisions. We will have to establish the relationship of two things. Profit all alone is nothing, and nobody can draw any decision on the basis of a single item. Therefore, it is essential that there must be a relationship between two things. So, if I establish a relationship of profit with the amount of investment made in the business, then of course one can draw a decision, one can take a right decision. Say for example, A has invested rupees 10 lakh in the business and he has earned rupees 1.5 lakh as a profit. So therefore, we can say that A has earned profit at the rate of 15% on the amount of capital invested in the business, and on the other hand B has invested rupees 15 lakh in the business. So here Mr. B has earned a profit of rupees 1.8 lakh.
So here the rate of profit is 12%. So 12% of 15 lakh is 1.8 lakh. So here the rate of earning profit by Mr. B is 12%. So here the result is entirely different, because just by going through the amount of profit earned by Mr. A and B respectively, we concluded that the performance of B is better than that of A. But when we establish the relationship of profit and capital invested by both the persons, that is Mr. A and Mr. B, we came to know that the rate of earning profit by Mr. A is 15%, whereas the rate of earning profit by Mr. B is 12%. So here we can conclude that the performance of Mr. A is better than that of B. So ratio may be expressed in different ways. Say for example, if I say that the current assets of a business are rupees 2 lakh, and whereas the current liabilities are rupees 1 lakh. So here the current ratio is 2:1, that is current assets divided by current liabilities, that is rupees 2 lakh divided by rupees 1 lakh. So here the ratio is 2:1. So the ratio may be expressed in times also. Say for example, the credit sales made by the enterprises is rupees 2 lakh, and the closing stock at the end of the financial year is, say for example, rupees 40,000. So here in this case, debtor turnover ratio is net credit sales divided by closing debtors. So here net credit sales is rupees 2 lakh and the closing debtor is 40,000. So here the debtor turnover ratio is 5 times. Likewise, the ratio can be expressed in terms of percentage also, and we can say that, for example, if the profit earned by the business is rupees 2 lakh and the amount invested by the business is rupees 10 lakh. So here we can easily calculate the percentage of profit earned by the business on the amount of capital invested in the business. So here the amount of profit earned by the business is rupees 2 lakh divided by amount of capital invested in the business is rupees 10 lakh multiplied by 100. So here the rate of earning profit is 20%. So ratio can also be expressed in percentage also, ratio can expressed in terms of times also. So now we further move to the objectives of ratio analysis. What are the main objectives? Why do we study the ratio analysis? How ratio analysis can serve the purpose of the enterprise? The first one is helpful in analysis of financial statements. So well friends, as I have already discussed, that the absolute figures are meaningless until or unless the relationship is established with two things, with two items. As we had discussed that the amount of profit earned by the business must be correlated with the amount of capital invested in that particular business. Only then we can draw the inferences. So here with the help of the ratio analysis, we can make a comparison of the financial statements of one period to the another, and we can come to know the weak point or the main strength of the business just by going through the ratio analysis, that what are the weak point and what are the
plus point of the business over a period of time. Then the second one is simplification of accounting data. So, well friends, we cannot draw a right decision until or unless the accounting information or the financial statements are presented to the managers in the most simplified way. Because if the huge data and very comprehensive data is presented before the management to take a decision, probably to the best of my knowledge, it would be next to impossible for the managers to take a decision about that particular item. So therefore, it is necessary that it is the duty of the accountant to present the accounting information in the most simplified and most understandable way, so that the managers can understand the implications of those items without any complexities. So once they understand the financial statements in a right spirit, they can take a right decision without taking much of the time. So here again the time factor is most important, because the persons who are sitting at the top, they have very less amount of time in analyzing these various kinds of things. Therefore, in order to keep the importance of the time into consideration, the data which need to be presented before the top management in order to take a decision must be presented in the most simplified way. Then helpful in comparative study. Yes, of course. Say for example, if we want to know the short-term liquidity position of a business over a period of 5 years. So here we need to understand, we need to analyze the current ratio of that particular firm for a period of 5 years. Say for example, if we want to understand the short-term liquidity position, short-term solvency position of a particular business from 2015 to 2020, we need to analyze the current ratio of that particular firm from 2015 to 2020, and on the basis of the trend analysis of the current ratio, we can easily understand and we can easily analyze the short-term solvency position of that particular business over a period of 5 years. Then helpful in estimating the trend of the business. So well friends, this point we have already discussed, that just by going through the various amount of sales, profits, purchases, expenses and other things, we can easily understand the trend analysis of these items. And for examples, if the amount of profit is either increasing or decreasing, we can easily come to know that by what rate the amount of profits are increasing and by what rate the amount of expenses are increasing, or by what rate the amount of return earned by the business is either increasing or decreasing. So here we can have the trend analysis of the various items which are very, very critical while taking a managerial decisions as far as the financial positions and as far as the profitability position of the business is concerned. Then helpful in measuring the efficiency of business. Yes, well friends, when we study the different ratios, say for example, in order to know the short-term solvency position of the business, we usually try to understand the current ratio and liquidity ratio of the firm.
So when the current ratio or the liquidity ratios are studied over a period of time, here generally we tend to see whether the current ratios are increasing or the current ratios are increasing, and in the same ways whether the liquidity ratios are increasing or liquidity ratios are increasing. So here it must be noted that only just by going through the ratio analysis as far as the current ratios and the liquidity ratio is concerned, we cannot come to know about the sound decision as far as the short term solvency position is concerned, because there are many other factors which need to be taken into considerations while studying the short term liquidity position. Say for example, while studying the current ratio, we generally try to understand the relationship of current assets and current liabilities. So here, just for the sake of the understanding of my learners, I may tell you that the current assets are those assets which can be converted into cash within a span of 1 year, and the current liabilities are those liabilities which are to be paid by the firm within a span of 1 year. So here the examples of the current assets may be stock, maybe the debtors, maybe the bills receivables, maybe the cash in hand, maybe the cash at bank, maybe the prepaid expenses. Likewise, the examples of current liabilities, bills payables, creditors, outstanding expenses, dividend payable, short term loan, etc. So when we try to make a relationship of current assets and current liabilities, say for example, if the current assets are rupees 2 lakh and the current liabilities are 1 lakh, so here the current ratio is 2:1, and the standard ratio of the current ratio is also 2:1. So we can draw the inferences that yes, the current assets are doubled to its current liabilities. It means that the firm is in a position to make the short term obligation well in time. But when we study the liquidity ratio, so we try to establish the relationship between the liquid assets and current liabilities. So here, for the sake of understanding, I would like to request to my learners that they must see and they must try to understand the current ratio and liquidity ratio simultaneously. So here the liquid assets are those assets which can be converted into cash very frequently or maybe within a span of 1 month. So here when we speak about liquid assets, so if we subtract the amount of stock and prepaid expenses from the current assets, we generally arrived at liquid assets. It means in liquid assets, stock and prepaid expenses are not taken into consideration because it is presumed that stock and prepaid expenses cannot be converted into cash very frequently. Therefore, both the items are not taken into account while calculating the liquid assets. So when we study the current ratio and liquid ratio simultaneously, then of course it enables us to take a better decision about the short term solvency position of a firm, because there may be a chance that out of rupees 2 lakh of the current assets, rupees 1.5 lakh may be stuck into the stock, and sometimes what happens that the maximum amount, it means out of rupees 2 lakh of the current assets, rupees 1.5 lakh is stuck into stocks. It means 75% of the total current assets are blocked into stock, and that stock
may be of no use because of no demands in the market. So when there is no demand, it is really very difficult for the enterprise to clear the stock in the market. So here the liquid ratio would be very, very less, because here out of rupees 2 lakh you deducted the amount of stock, that is 1.5 lakh. So here the liquid assets are, say for example, 50,000 only, and the current liabilities are 1 lakh. So here the liquid ratio is 0.5:1, whereas the standard liquid ratio is 1:1. So again the firm finds it very difficult to make the payment of the short term obligation within a very short span of time, maybe within a 1 month. So therefore these ratio analysis must be studied simultaneously in order to arrive at a better decision. Then the limitations of ratio analysis. The first one is false accounting data gives false ratio. So when the accounting statements, when the accounting data do not reveal a true picture of the financial statements. So sometimes what happens that there is a practice of valuing the closing stock, and generally we take into consideration the market price or the cost price, whichever is less. But sometimes when the stock is overvalued, it will unnecessarily enhance the amount of profit. So therefore the comparison is not possible, because sometimes if I value the closing stock on the basis of different principles, and in the next year I take some different basis in order to value the closing stock. So therefore the correct decision in this particular case would not be possible when the accounting data are not fair. So any ratio or any decision taken on the basis of false accounting data will also lead to the false decision. Then the second one is ratio becomes less effective due to price level change. Yes, well friends, because the hike in prices, that is what we call inflation. So because of inflation, sometimes it is very necessary to consider the impact of inflations while taking the managerial decision. So if I say that in the year 2018 the firm has sold 1000 machines against rupees 10 lakh, and in the next year the firm has again sold the same 1000 machines against rupees 12 lakh. So just by going through these data, one can draw the inferences that the sales has increased by rupees 2 lakh, that is 20%. But in practical it may not be possible because of price level change, because from one period to another the price or the commodity price of the commodities may go up, and only because of the price level change the cost or the price of the asset has gone up. So here we cannot conclude, because the amount of rupees 10 lakh in the year 2018 and the amount of rupees 12 lakh in the year 2019 may have same value because of the price level change, because of the inflation. The value of rupees 10 lakh and the value of rupees 12 lakh in the year may remain same because of the price level change. So therefore the ratio analysis becomes ineffective sometimes because of the price level change.
Then limited use of single ratio. So well friends, ratio analysis only provide some hints about the financial and the profitability position of the business. Solely on the basis of ratio analysis we cannot take a sound decision. Therefore many ratios must be studied simultaneously in order to arrive at a sound profitability and financial position. Then window dressing. Sometimes what happens, this concept of window dressing generally takes place maybe by mistake or maybe by deliberate attempt. So usually it is basically a deliberate attempt. When we speak about window dressing always refers to the deliberate attempt. Say for example, if the current assets of the business is rupees 2 lakh and the current liability is rupees 1 lakh in a particular year. So if the firm decides to buy goods of rupees 1 lakh on credit basis, then the current ratio would be, because the current assets were earlier rupees 2 lakh and the current liabilities were 1 lakh. Now in the end of the financial year, the enterprises decided to buy the goods worth rupees 1 lakh on credit basis. So here the current assets have increased by rupees 1 lakh because the goods is coming in. So therefore the closing stock would be enhanced by rupees 1 lakh. So the current assets would be rupees 3 lakh now. And on the other hand, the current liabilities will also increase by rupees 1 lakh because we have bought the goods worth rupees 1 lakh on credit basis. So here the liabilities have also gone up by rupees 1 lakh simultaneously. So now the current liabilities are rupees 2 lakh. So here the current ratio would be 3 lakhs divided by 2 lakh, that is 1.5:1. Earlier the current ratio was 2:1 because the current assets were rupees 2 lakh and the current liabilities were rupees 1 lakh. So now in order to hide the facts, the firm can take a decision either to record this business transactions of buying goods worth rupees 1 lakh on credit maybe in the starting of the next year, or the firm can postpone this decision to buy the goods of rupees 1 lakh on credit basis for quite some times. So this credit worthiness of the firm goes down in case if the factual position is concealed by the firm. So this window dressing also plays a very vital role, and the financial statements must be studied thoroughly in order to take a sound decision about the profitability and about the financial position of a firm. Then the lack of proper standards. So well friends, say for example, if we talk about current assets, so the standard ratio of the current ratio is 2:1. It means the current assets of the firm must be doubled to its current liabilities. So if the actual ratio is 2:1 or more than 2:1, we generally assume that the short-term solvency position of a firm is sound enough. But well friends, it is not necessary in all the cases. It depends upon circumstances to circumstances. It depends upon the nature of the business carried on by the firm. Sometimes what happens that if the firm has very good agreement with the bankers, say there is an agreement between the firm and the banks that as and when the firm needs the liquid cash, the banks will finance. So even under such a circumstances, if the current ratio of the firm is 1:1, it will also serve the purpose, because as and when the firm needs
liquidity, the bank is providing the liquidity to the firm. So it is not necessary that there must be the current ratio must be 2:1. Even the current ratio is less than the standard ratio, it may be considered better if there is an agreement between the firm and the bankers to provide the liquidity as and when the firm's needs. Effect of personal ability and biasness of the individual. So the study of ratio analysis also depends upon the ability and upon the personal biasness of the accountant or the manager who have prepared the financial statements. Sometimes what happens, if I want to measure the financial performance of a particular business enterprise, so I cannot take a better decision if the firm has involved into the personal biasness, or sometimes what happens that person A has considered the financial performance based on the profit which is after tax. The another person may measure the performance of the business enterprises on the basis of gross profit. It means profit before interest and tax. So here the personal biasness and the personal ability of the accountant who have prepared the financial statements also matters a lot while studying the financial and profitability position of the business firms. So well friends, we will discuss some ratios like current ratio we have discussed. So current ratio is basically a relationship between current assets and current liabilities, and the standard ratio of the current ratio is 2:1. It means if the current assets are doubled to its current liabilities, generally it is presumed that the firm is in a position to make the payment of short-term obligations well in time. Then liquid ratio, we have already discussed that it is the relationship between the liquid assets and current liabilities. And when we speak about liquid assets, so if we deduct the amount of stock and prepaid expenses from the current assets, we generally arrived at the liquid assets. So the standard of the liquid ratio is 1:1. It means the liquid assets must be equal to the current liabilities. So if it is happening, so we presume that the firm is in a position to make the short-term obligations very promptly without making much of the time. Then second one is leverage ratio or capital structure ratios. So these leverage or capital structure ratios are studied in order to study the long-term solvency position of the business. So here the first one is debt equity ratio. It means the debt equity ratio is long-term loan divided by shareholder funds. So debt equity ratio establish the relationship between the long-term loan and shareholder funds. So more the debt equity ratio, the risky it is for the business, because it means that the amount of long-term loan is more than the amount of shareholder funds. It means that the firm has more amount of long-term loan. Most of the funds of the shareholder funds are blocked into that. So when such a situation arises, it is really very difficult for the firms to make the payment of the interest well in time, and even making the payment of the principal also become risky for the firm
when the debt equity ratio is high enough. So the standard ratio of the debt equity ratio is considered 2:1. Then debt to total funds ratio. Well friends, debt to total funds ratio, so it is equal to long terms loan divided by shareholder funds plus long terms loan. सो इस रेशियो से जनरली हमें मालूम चलता है कि फर्म के जो टोटल फंड्स हैं उन टोटल फंड्स में लॉन्ग टर्म्स लोन का कितना हिस्सा है. सो अगर मैं ये कहूँ कि डेट टू टोटल फंड रेशियो इज 70%, इसका मतलब ये हुआ कि फर्म के पास जितने टोटल फंड्स हैं उसका 70% जो है फर्म ने बाहर से मैनेज किया हुआ है, लोन लेकर के, लॉन्ग टर्म्स लोन लेकर के जो है मैनेज किया हुआ है. तो जब फर्म के पास 70% अपनी पूंजी का हिस्सा लॉन्ग टर्म लोन से और एक्सटर्नल कैपिटल से होता है तो उस केस में फर्म की जो रिस्क है वो रिस्क फर्म का बढ़ जाता है. तो ऐसे केसों में ज़्यादातर ये माना जाता है कि 67% जो है वो आइडियल माना गया है. जनरली जो है बाय एंड लार्ज हम इसको आइडियल मानते हैं कि टोटल जो फर्म के फंड्स होते हैं उसमें लॉन्ग टर्म्स लोन का हिस्सा जो है वो 67% से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 2/3 से अधिक नहीं होना चाहिए. और अगर 67% से भी अधिक है डेट टू टोटल फंड्स रेशियो तो इसका मतलब ये जो है फर्म ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल कैपिटल के ऊपर रिलाय कर रही है और ये फर्म के लिए बहुत ही रिस्की पोजीशन होती है, क्योंकि यू नेवर नो कि जो एक्सटर्नल पर्सन्स हु हैव फाइनेंस द फर्म्स कब वो फर्म से अपना पैसा निकाल लें. और सेकंड, फर्म के ऊपर जब फर्म ने से फॉर एग्जांपल 70% अपनी कुल फंड्स का 70% बाहर से मैनेज किया हुआ है तो उस बाहर से जो फंड्स मैनेज किए हुए हैं उसके ऊपर फर्म को ब्याज भी देना पड़ता है. तो फर्म का काफ़ी सारा जो प्रॉफिट है वो फर्म को ब्याज के रूप में चुकाने में ही उसको यूज करना पड़ता है. तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है वो वास्तव में ही बहुत कम बचता है. तो ऐसी जो सिचुएशन होती है वो एक रिस्कियर सिचुएशन मानी जाती है. थर्ड वन इज proprietary ratio. So proprietary ratio is shareholder funds upon total assets. अब इससे हमें ये मालूम चलता है कि जो फर्म्स के पास टोटल एसेट्स हैं उन टोटल एसेट्स में जो फर्म के शेयर होल्डर्स होते हैं, जो फर्म के ऑनर होते हैं, उस टोटल एसेट्स में फर्म के ओनर्स का कितना पैसा लगा हुआ है. तो ये जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा ही अच्छा रहता है, बट जनरली इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो 2:1 होता है. तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि अगर ये रेशियो ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्म की जो टोटल असेट्स हैं उन टोटल असेट्स में से फर्म के जो अपने शेयर होल्डर्स हैं, फर्म्स के जो अपने ऑनर्स हैं, जिनको हम इक्विटी कैपिटल बोलते हैं, इंटरनल कैपिटल्स बोलते हैं, तो उनका हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा है. इसका मतलब फर्म एक्सटर्नल कैपिटल के ऊपर, एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर जो है वो कम से कम रिलाय कर रही है और फर्म के पास कोई ऐसी रिस्की सिचुएशन नहीं है. और अगर आप ये कहें तो ये इसका डेट टू टोटल फंड्स वाला जो रेशियो है उसी के एक किस्म से ये उल्टा हो जाता है. नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड असेट्स टू प्रोप्राइटर फंड्स रेशियो. तो इससे हमें पता चलता है कि जो फर्म के शेयर होल्डर्स हैं उन शेयर होल्डर्स का कितना पैसा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टेड है. तो बाय एंड लार्ज जो हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं तो वो फिक्स असेट्स हमेशा शेयर होल्डर फंड्स में से ही परचेज करते हैं.
क्योंकि जनरली ऐसा बहुत कम होता है कि अगर हम फिक्स्ड असेट्स एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के ऊपर ही डिपेंड रहे कि बाहर से जो पैसा आएगा उन्हीं के बेसिस पे ही हम अपनी फर्म्स की फिक्स असेट्स परचेज करेंगे, तो वो फर्म के लिए बहुत रिस्की पोजीशन हो जाती है। तो बाय एंड लार्ज ऐसा देखा जाता है बिजनेस में कि फर्म की जो फिक्स एसेट्स होती हैं वो जनरली जो इंटरनल इक्विटीज होती हैं, जो शेयर होल्डर्स फंड्स होते हैं, उसी शेयर होल्डर्स फंड्स में से बाय की जाती हैं। तो इस रेशियो से हमें यही पता चलता है कि जो शेयर होल्डर्स फंड्स हैं उनका कितना पैसा जो है वो फिक्स एसेट्स में लगा हुआ है। तो ये रेशियो जितना अधिक होगा उतनी ही जो फर्म की पेइंग कैपेसिटी है वो पेइंग कैपेसिटी अच्छी होगी। तो जितना ये रेशियो कम होगा उतना ही फर्म के लिए जो पेइंग कैपेसिटी है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन है, वो अच्छी होगी। क्योंकि अगर मान लो ये रेशियो 40% आता है तो इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर फंड्स का केवल 40% ही पैसा फिक्स असेट्स में इन्वेस्टेड है, रिमेनिंग जो 60% है वो वर्किंग कैपिटल के लिए यूज किया जा रहा है। तो इसका फर्म के ऊपर जो ज़्यादा बर्डन है वो ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता और फर्म इज इन ए पोजीशन टू मेक द पेमेंट्स ऑफ इट्स ऑब्लिगेशंस विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। नेक्स्ट वन इज capital gearing ratio. So capital gearing ratio is basically expressed, it is equity capital plus reserves plus credit balance of profit and loss account divided by fixed cost bearing capital. So well friends, ये जो रेशियो होता है, if this ratio is on the higher side, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्म के पास जो फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल है वो ज़्यादा है और इक्विटी कैपिटल फर्म के पास कम है। तो इसको हम हाई गियर्ड कैपिटल या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। दैट इफ़ द अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज इज मोर देन द अमाउंट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इट इज़ जनरली नोन एज हाई गियर्ड कैपिटल। और मैं अपने लर्नर्स को एक चीज़ में और भी अच्छे से बताना चाहूँगा कि जो हाई गियर्ड कैपिटल होती है, चाहे वो प्रेफरेंस कैपिटल है, चाहे वो डिवेंचर्स हैं, चाहे हमने लॉन्ग टर्म्स लोन लिए हैं, बैंक से लिए हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हैं, तो हाई गियर्ड कैपिटल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ यही है कि ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाली सिचुएशन हमेशा इसलिए यूज की जाती है ताकि जो प्रॉफिट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल हों उनको मैक्सिमाइज किया जा सके। और उसको मैक्सिमम करने के पीछे दो लॉजिक हैं, वो यही हैं कि जो फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल होती है वो हमेशा चीपर होती है इक्विटी कैपिटल की बजाय। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके पीछे दो रीजन्स हैं। एक पहला रीज़न तो ये है कि जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और ऑन लॉन्ग टर्म्स लोन जो होता है वो बहुत कम होता है। से फॉर एग्जांपल इट में बी 7%, 8%, 10% एंड 12%, वेयर एज द रेट ऑफ डिविडेंड समटाइम्स इट में बी 100%, 125%, sometimes 50%, 75%. Then the second logic is that the amount of interest which we have paid on account of managing the funds from external sources of financing, that is from debentures or by taking a loan, where we need to pay a fixed cost capital. So this amount is considered as an allowed expenses while preparing the income statement of the business. So this amount of interest we generally charge debiting to the profit and loss account. So इससे जब हम इंटरेस्ट का अमाउंट जो हम एक्सटर्नल पार्टीज को पे करते हैं तो उस इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट करते हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो इंटरेस्ट का जो चार्जेज है वो हमारे लिए अलाउड एक्सपेंसेस है और अल्टीमेटली इससे हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर इसका असर पड़ता है। और जब इट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन
the liabilities which we need to pay to the government in terms of tax liabilities will also be less. So these are the two logic and these are the two reasons that the trading on equity or high geared capital is always used in the business in order to enhance the profit available for equity shareholder. But at the same time यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि किसी भी फर्म को हाई गियर्ड कैपिटल तभी बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करनी चाहिए व्हेन देयर इज ए रेगुलरिटी ऑफ द प्रॉफिट, नंबर वन, एंड व्हेन देयर इज ए सर्टेनिटी ऑफ द प्रॉफिट। क्योंकि अगर रेगुलरिटी और सर्टेनिटी प्रॉफिट्स की नहीं है तो उस केस में हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा ऑब्लिगेशन है जो हमें पे करना ही करना होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, हमें इंटरेस्ट का पेमेंट एक्सटर्नल पार्टीज को करना ही करना पड़ेगा। और दूसरी एक चीज़ जो मैं अपने लर्नर्स को बताना चाहूँगा वो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि फर्म को हाई गियर्ड कैपिटल की तरफ या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की सिचुएशन तभी अराइज करनी चाहिए जब फर्म की रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द एक्सटर्नल पार्टीज। और वी कैन से दैट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड long term loan is less than the rate of investment rate of profits on investment made by the business. So if this is the situation, only the trading on equity or high geared capital situation is advisable, otherwise it would be a very risky situation for the firms in case if these things doesn't exist. Then interest coverage ratio. So well friends, it is expressed in terms of net profit before charging interest and tax divided by fixed interest charges. So इस रेशियो से हमारे को ये पता चलता है कि हमारे जो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड चार्जिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स, जो ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, उसका कितना हिस्सा जो है हम इंटरेस्ट को पे करने के लिए यूज कर रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना हिस्सा हमारे प्रॉफिट का जो है ले रहा है उसका पेमेंट करने के लिए। तो ये जो हमारा जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा फर्म के लिए अच्छा रहेगा। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज 6 to 7 times। इसका मतलब ये है कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी मिनिमम 6 to 7 times of what we are supposed to make the payment of interest to the external parties। So कम से कम इसका 6 से 7 गुना होना चाहिए। तो अगर हमारे प्रॉफिट्स जो हमें इंटरेस्ट पे करना है उस इंटरेस्ट पेबल का 6 to 7 times होगा हमारा प्रॉफिट, तो ऐसी जो सिचुएशन है वो बाय एंड लार्ज फर्म के लिए एक साउंड सिचुएशन मानी जाती है। देन द एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो। सो द फर्स्ट वन अंडर दिस कैटेगरी इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो। So stock turnover ratio is expressed as cost of goods sold divided by average stock. So here cost of goods sold can easily be calculated by deducting the amount of gross profit from the net sales, or we can easily calculate the opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock, that is the transactions or the items which generally we record in the debit side of trading account, that is opening stock plus purchases
plus direct expenses minus closing stock, and closing stock is always shown in the credit side of the trading account. अब प्रश्न ये उठता है कि इस स्टॉक से हम क्या इस रेशियो से हम क्या डिसीजन लेते हैं। तो इसका बड़ा सीधा सा जो हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि व्यवसाय का जो हमारा स्टॉक है वो हाउ फास्ट आर स्टॉक इज कन्वर्टिंग इनटू सेल्स। तो ये रेशियो हमारा जितना ज़्यादा होगा उतना ही फर्म के लिए एक कंड्यूसिव सिचुएशन होगी, फर्म के लिए फेवरेबल सिचुएशन होगी, क्योंकि फर्म के पास ज़्यादा अमाउंट में स्टॉक रखा रहना कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन नहीं होती है। स्टॉक तो जितना हमारे पास मिनिमम रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। हमारा जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्टॉक जो है वो बहुत जल्दी, बहुत फास्ट जो है वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हमारे को ब्याज का भी नुकसान नहीं होता है। जो पैसा हम जैसे ही प्रोडक्शन में लगाते हैं तुरंत हमारा स्टॉक जो है वो इमीडिएटली सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारी साइकिल है वो साइकिल हमारी हमेशा मूव करती रहती है, कभी स्टॉप नहीं करती है। इस केस में नेक्स्ट वन इज डेटर टर्नओवर रेशियो। सो डेटर टर्नओवर रेशियो इज कैलकुलेटेड एज नेट credit sales divided by average debtors plus average bills receivable. So net credit sales we can easily calculate by deducting the sales return from the total sales. And when we speak about average debtor, so यहाँ पे मैं अपने साथियों को, अपने लर्नर्स को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब हम एवरेज डेटर्स निकालते हैं तो ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो एवरेज डेटर आ जाता है। बट ऐसी सिचुएशन में हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर क्वेश्चन के अंदर बैड डेट्स या प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स दिए हुए हैं तो ऐसी स्थिति में बैड डेट्स और प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो हैं वो डेटर में से सब्ट्रैक्ट नहीं करने चाहिए। जो टोटल अमाउंट है डेटर का, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, उसको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 जो अमाउंट आएगा वही लेना चाहिए। कभी भी डेट और जो प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाए गए हैं उनको नहीं वो सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो हमारा जो डेटर टर्नओवर रेशियो है उससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे डेटर्स हैं उनसे कितना फास्ट हमारे को पेमेंट मिल रहा है। तो जितना हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जितना जल्दी आपको अपने डेटर से पैसा मिल जाएगा फर्म के लिए उतनी ही सिचुएशन फेवरेबल होगी। देन एवरेज कलेक्शन पीरियड। So average collection period is expressed in terms of debtors plus BR divided by credit sales per day, or we can also calculate by again this formula 365 days or 12 months divided by debtor turnover ratio. So if debtor collection period is 30 days, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो डेटर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंड की हुई है तो एवरेजली हमारे को डेटर से जो है वो 30 डेज में हमें जो है पैसा मिल रहा है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि अगर आज हम अपने डेटर्स को क्रेडिट सेल्स करते हैं तो उनसे पेमेंट हमारे को 30 डेज दैट इज़ 1 मंथ के बाद मिलेगा, और अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड 2 मंथ्स है तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि आज जो हम सेल्स कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, उसका पेमेंट हमें अपने डेटर से 2 मंथ्स के बाद मिलेगा। देन क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बिल्स पेबल। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम अपने सप्लायर्स को कितना क्विकली पेमेंट कर रहे हैं। तो ये क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी जितना हमारा अधिक होगा उतना ही फर्म के लिए अच्छा होता है। इसका मतलब ये है कि हम अपने सप्लायर्स को, हम अपने क्रेडिटर्स को बहुत जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, जिससे फर्म की जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो इंक्रीज होती है और फर्म को कभी भी
गुड्स परचेज करने में कभी दिक्कत नहीं आती है। तो ये जितना ज़्यादा होगा फर्म के लिए उतनी ही फेवरेबल सिचुएशन होगी। देन एवरेज कलेक्शन पीरियड, अगेन क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल डिवाइडेड बाई नेट क्रेडिट परचेज पर डे। तो अगर हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड अगर हमारा से फॉर एग्जांपल 1 मंथ है, तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि अगर आज हम अपने सप्लायर से क्रेडिट परचेज करते हैं तो उसका पेमेंट जो है हम 1 मंथ के बाद करेंगे। और अगर ये 15 दिन आता है एवरेज पेमेंट पीरियड, तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि आज जो हम अपने सप्लायर से क्रेडिट परचेज कर रहे हैं उसका पेमेंट जो है फर्म वो एवरेजली 15 दिन के बाद उसका जो है पेमेंट कर देती है। देन फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, सो इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई नेट फिक्स्ड एसेट्स। इस रेशियो से बेसिकली हम ये डिसीजन निकाल सकते हैं कि हमारी फिक्स्ड असेट्स को कितना एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है, अर्थात फिक्स्ड असेट्स को हम यूज करके हम कितना फास्ट जो है वो अपनी सेल्स कर पा रहे हैं। तो जितना हमारा ये रेशियो ज़्यादा होगा, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा फर्म के लिए अच्छा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी नेट फिक्स असेट्स हैं वो बहुत एफिशिएंटली यूज हो रही हैं सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए। देन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज एक्सप्रेस in terms of cost of goods sold divided by working capital, and working capital we can easily calculate by subtracting the current liabilities from the current assets. It means working capital is equal to current assets minus current liabilities. तो इस रेशियो से हमें ये पता चलता है कि हाउ एफिशिएंटली द वर्किंग कैपिटल इज यूटिलाइज्ड इन द बिजनेस। तो ये भी हमारा रेशियो जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ठीक रहता है, जिससे मालूम चलता है कि वर्किंग कैपिटल जो है वो एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है बिज़नेस के अंदर। तो ये हमारे कुछ ऐसे रेशियोज़ थे जो बहुत ही प्रोमिनेंट रेशियोज़ आप इनको कह सकते हैं, और मुझे पूर्ण रूप से ये उम्मीद है कि जो ये हमारी डिस्कशन रही है आज रेशियो एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, तो ये जो इम्पोर्टेंट रेशियोज़ हैं, इन रेशियोज से एक मैनेजर क्या इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकता है और कैसे वो फर्म की जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकता है। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि आज का ये लेक्चर हमारे लर्नर्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा, और हमारे लर्नर्स की जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, हम उनको रिप्लाई करेंगे ताकि हमारे लर्नर्स को इस डिस्कशन का, इस लेक्चर का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।